Hi students, I am Dr. Bandita Rath again. So in our last class I have introduced you to biotechnology, genetic engineering, your recombinant DNA technology, and also we have started with your tools of your recombinant DNA technology. We had also been to your brief of your DNA and RNA. So in tools of your recombinant DNA technology we had completed in our last class your enzymes. आमे last class रे आमे enzyme सारी थिले जेतक enzyme एठी अछि आमे almost complete कर देइचे. So today we will be starting with your recombinant DNA. Recombinant DNA basically has your two parts, your vector and insert. So first we will be dealing with vector. Vector is your carrier DNA. Vector is a molecule of DNA which helps the insert or which carries the insert from one organism to another organism. ता माने कौन मोर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो किंबा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट हो मु जोटा को चाहूची गोटे अधिका अमाउंट रे प्रोड्यूस करिबा पे मु सेटा को गोटे लोअर ऑर्गेनिज्म भितर को मु सेटा इंसर्ट करिबा पे चाहूची काहे कि लोअर ऑर्गेनिज्म मानकर रेप्लिकेशन कैपेसिटी अधिका डिवीजन बहुत अधिका मते बहुत कम समय भितर मते बहुत अधिका मते मोर एंड प्रोडक्ट मिल जिवो. For that I take the help of vector. So these vector are self-replicating. They replicate autonomously. What do I mean when I say they are self-replicating? से माने जो host भितर को जाइचंती से माने जो host भितर को जाइचंती सेठी से माने without the help of the host they can replicate. रेप्लिकेशन निहाती दरकार कारण डीएनए रो अमाउंट अधिका नहले भी आमर एंड प्रोडक्ट अधिका हेनी. डीएनए अमाउंट अधिका है कि सेटा इट मस्ट बी रिलीजियसली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सो यही सबू कैरेक्टरिस्टिक आम वेक्टर भितर अच्छी. आउ गोटे मेजर थिंग जोटा कि वेक्टर भितर अच्छी इट इज योर जेनेटिक मार्कर फॉर सिलेक्टिव रिकॉग्निशन. What is your genetic marker? Genetic marker is a sequence of DNA which is present in a vector which helps us to identify those host cell which is carrying the recombinant DNA. से हमको help करूची जणेबा पे को host cell भितरे हमरो recombinant DNA टा अछि. मु आगुरु भी तुमको कहितले लास्ट क्लास रे मु गोटिए सेल नौनी किंबा गोटिए recombinant DNA नौनी. I am dealing with millions of cell and triple the amount of your DNA or your recombinant DNA. आउ सबू सेल भी ए recombinant DNA को तांको भितरु को नेबे it is not possible. So few of those cell might have taken those recombinant DNA. But how do I know among this million of cell which cells have taken this recombinant DNA? For this genetic marker is highly essential. So we will be going in detail when we will be reading about we will be dealing with the characteristics of this vector. Vectors are of different type. Few example I have given over here. They are your cloning vector, expression vector, and in cloning vector we are having your plasmid, cosmid, bacteriophage, then artificial chromosomes too. We will be dealing with your characteristic of vector. All DNA are not vector. All DNAs cannot act as. I said that vector is a DNA molecule, but all DNA molecule they cannot act as vector. They need to have few characteristic features. तांको भितरे किछिटा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहिबा दरकार जहा फल से माने क्वालिफाई करिवे गोटे वेक्टर हेबा पे. सो गोटे डीएनए रो कोन कैरेक्टरिस्टिक फीचर दरकार वेक्टर हेबा पे? इट शुड बी फर्स्ट its size, it should be small in size. A vector should be less than 10 kilobase. 10 kilobase माने कहते 10,000 base pair. When we are saying 10 kilobase, it means 10,000 base pair. The length of the vector should be less than 10,000 base pair or your 10 kilobase, and also it should be easy to isolate. मु आराम से सेटा मु जो भी ऑर्गेनिज्म भितर मु जो भी होस्ट भितर मु वेक्टर टा को मु इंसर्ट करथिबी मु इजीली सेटा को से होस्ट भितरु बाहर कर दे पारिबी.
because I need it for my further manipulation, I need it for my further experiment. So this extraction of this vector from host should be very easy process. Second thing, it should have a origin of replication. Eita mu gote vector neichi, this is your PUC19 or PUC19. So you must be having a query, why is this name P small UC19, why is this? The name of a vector which is P, a small p always represent your plasmid. Then UC is University of California. एटा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रे डिस्कवर हेइथिला, सेथिपाई ता नाटा अछि PUC19 और PUC19 आमे कहूचे. So a PUC19, if we can see, there is a green color region over here or green color sequence over here. This is the sequence of origin of replication. What is origin of replication? It is a sequence on DNA which helps the DNA to replicate. It is the sequence of DNA which is helping the DNA to replicate, and without this origin of replication, a DNA will not be able to replicate. गोटे origin of replication रही पारे, गोटे रु अधिका origin of replication भी रही पारे, but one origin of replication is must in recombinant DNA technology. Why? Because I need that the recombinant DNA of my interest should be replicating by its own, and after replication it should be dividing between the daughter cell during your cell division. So it should have a origin of replication, which is a must. And third feature is your cloning sites. Your cloning site, we also say them as a target site, is a restriction endonuclease recognition site. माने एठी आमे जदि देखिबा दीटा जगह रे आमे डार्क ग्रीन कलर आमे एरिया देखुचे. So these are basically your sequences of your restriction sites. Sequences of restriction site mane kono, we had already dealt with your restriction enzyme, and restriction enzyme recognizes your specific restriction site. So in this cloning region, we are having the sequences of restriction enzyme. किछि particular restriction enzyme रो site थाए नहीं, प्रतिटी जो कंपनी वेक्टर डिजाइन करछंती, प्रतिटी कंपनी तांको निज हिसाब से सेमाने ए restriction site उडा को insert करथांती. Usually a single restriction site is never added. A series of restriction sites are added. As we can see over here, they have added your EcoR1, SAC1, SMA1, KPN1, SMA1, BAMH1. गोटे क्लोनिंग साइट रे सेमाने एते गुडा को रेस्ट्रिक्शन साइट गुडा को इंट्रोड्यूस करचंती. तांको सेकंड क्लोनिंग साइट रे से आर हैविंग योर BAMH1, ZABA1, PST1, SPA1 and your HIN3. So why is the necessity of your restriction site? First of all, because the vector, why I am taking a vector is there for carrying the DNA of my insert. So first I need to insert my DNA into the vector, and vector is a circular DNA, it might be a linear DNA also. So vector should be first cut open. We should be first cutting that vector. How do I cut a vector? It is always with the help of restriction enzymes. That's why they have inserted the restriction site. Without restriction site, the restriction enzyme will not be able to identify or will not be able to cut the DNA. That's why they have given a series of restriction site. Then why they have given series of restriction site? One restriction site would have been enough for us. They have given a series of restriction site for our convenience. All lab do not have all possible restriction endonuclease. सबु प्रकार restriction endonuclease समस्तों का पाखरे सबु लैब रे न थाए. Suppose मो पाखरे KPN1 अछि and they would have given EcoR1. So मो पाई से वेक्टर टा यूजलेस. So जेते बेले गोटे कंपनी वेक्टर तैयारी करी थाए, these are available commercially. कंपनी माने एगुड़ा को commercially बिकंती. So when a company is designing a vector, they are designing a vector in such a way that they give few restriction sites. So it will be helpful for whoever is dealing with a vector to carry on with their experiment. So these are regarding your cloning site or restriction site. जेते बेले cloning site रे multiple restriction sites थाए बा multiple restrictions
सीक्वेंसेस गुड़ाक थाए सेटा को आमे कहबा मल्टीपल क्लोनिंग साइट. So over here I will be calling this area and this area as your multiple cloning site. Now coming to your fourth point, the recombinant vector should be introduced into a host. से आमर जो recombinant vector हला सेटा host भितर को easily जिबा दरकार. आमर ultimate we need a huge amount of DNA of interest or the product, that is a protein product of that insert. तो तापे आमको ह्यूज अमाउंट ऑफ दैट वेक्टर दरकार. आमे जेते बेले गोटे होस्ट भितर को वेक्टरटा छाड़ुचे तार रेप्लिकेशन हुए आ तार अमाउंटटा बढ़ी बढ़ी चले. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग माने एक्जाक्ट से वेक्टर तार रेप्लिकेशन है कि एक्जाक्ट से वेक्टर ही बढ़ी बढ़ी चले. सो मते बहुत अमाउंट रे मते मोर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर दरकार किंबा तार प्रोटीनटा दरकार. सेथि पाई गोटे होस्ट भितर को गोटे एप्रोप्रिएट होस्ट भितर को से जीवा दरकार. सो प्रतिटी जो डीएनए होस्ट भितर को जाई परिबनी सेटा को मु वेक्टर कहि परिबिनी. सो वेक्टर शुड बी हैविंग अ कैपेसिटी टू एंटर अ होस्ट ऑफ माय इंटरेस्ट. देन वेक्टर शुड नॉट बी टॉक्सिक टू द ऑर्गेनिज्म. वेक्टर रो टॉक्सिसिटी रहिबा दरकार नै कारण से ऑर्गेनिज्म भितर जाई के टॉक्सिसिटी जदी क्रिएट कला ऑर्गेनिज्म टा मरि जाई पारे आ अल्टीमेटली आई वोंट बी हैविंग एनीथिंग इन माय हैंड्स. सो इट शुड नॉट बी टॉक्सिक टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म. This is the most important characteristic of your vector which we will be dealing in detail, that is your selectable marker. Again in this PUC 19 you can see a sequence over here or a region over here which has been marked in your peach color. It is AMPR. This is your ampicillin resistant gene. This is your ampicillin resistant gene. And over here this ampicillin resistant gene, it is acting as a selectable marker. So why is the selectable marker necessary? First, a selectable marker, it helps me to identify those hosts which are having my recombinant DNA. That is, it will help me to identify the recombinant host or the transformed host. जो host भितरे मो recombinant DNA टा अछि ताकु मो recombinant host कहि परिबे किंबा transformed host भी मो कहि परिबे. So it helps me to identify those hosts which are having the DNA or the recombinant DNA of my interest. Second, it identifies and eliminates those hosts that are not having the recombinant DNA. जो होस्ट मानक भितरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा नाही से सेटा को आइडेंटिफाई करे आ सेटा को किल भी कर दिए, सेटा को मारी मध्य दिए. सो आई विल बी लेफ्ट विथ ओनली दोज होस्ट विच आर हैविंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑफ माय इंटरेस्ट. कहीं कि सेमानको मारदेबा दरकार अन्य होस्ट गुड़ाक मोर किछि यूज रो नाही. जा भितरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाई से होस्ट मो पाई किछि भी यूजफुल नाई. सेथिपाई आई वांट टू एलिमिनेट देम एंड दिस सिलेक्टेबल मार्कर व्हाट इज डज इट एलिमिनेट्स दोस अननेसेसरी होस्ट हु आर नॉट हैविंग द वेक्टर recombinant vector in them. And last, it isolation and growth of transformed cell. It helps in isolation and growth of transformed cell also. So usually your resistant gene providing resistance to antibiotics like your ampicillin, kanamycin, tetracycline, chloramphenicol, all these genes they are used as your selectable marker when we are intending to do our experiments taking your Escherichia coli. मु जेतेबेले ई कलाई भितरे मोर एक्सपेरिमेंट गुड़ा को डिजाइन करूची क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट डिजाइन करूची देन यूजुअली दीज आर टेकन एज अ सिलेक्टेबल मार्कर. So what happens is after inserting the recombinant DNA of my interest into the host, what I'll do is I'll grow this organism. For example, if I am taking E. coli, I'll grow this organism on a solid growth media. Okay. If that growth media is containing ampicillin, then only those organisms which are having the recombinant DNA will survive, and those E. coli which are not having the recombinant DNA, they will be eliminated out. ता माने कौन एटा देखो, दिस इज अ पेट्री प्लेट. पेट्री प्लेट भितर आमर सॉलिड ग्रोथ मीडिया अच्छी.
आ गोटे ग्रोथ मीडिया रे आमे सेटा को एलबी अगार प्लेट भी कहू ग्रोथ मीडिया भितर आमे एम्पिसिलिन आमे देने आमे एंटीबायोटिक देने आउ गोटे ग्रोथ मीडिया भितर एम्पिसिलिन आमे देइचे मुझे एम्पिसिलिन कहीं नहीं कारण मोर वेक्टर जोटा मुझे देखी मो वेक्टर रे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अच्छी सपोज गोटे ई कलाई मोर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर दिस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वेक्टर विच इज हैविंग माय डीएनए ऑफ इंटरेस्ट सपोज गोटे ई कलाई सेटा को ता भितर को नहीं ई कलाई रबी ई कलाई रबी एम्पिसिलिन अगेंस्ट रेजिस्टेंस आसी जीवो ता माने कौन आगुरु ई कलाई पाखे रेजिस्टेंट नथिला ई कलाई जदि था आ मु एम्पिसिलिन दे थांती ई कलाईटा मर जाई थांता बट एबे जेते बेले गोटे फॉरेन डीएनए गोटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए अच्छी कैरिंग द फॉरेन डीएनए ऑफ माय इंटरेस्ट सेटा जेते बेले एबे ई कलाई भितर अच्छी से वेक्टरटा कौन करछि से वेक्टर जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अच्छी ता देहरु एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रोटीन तैयारी होछि एंड दिस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रोटीन इज हेल्पिंग द होस्ट to grow in an ampicillin rich media ताकू आउ मारी पारुनी एबे एम्पिसिलिन एटा को मारी पारुनी काहे कि मारी पारुनी कारण बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन योर वेक्टर ओके सो if I am growing the cells, if I am growing my recombinant cells in a plate without ampicillin or in a growth plate without ampicillin, then all the cells will be growing. एटी देखो जोटी A mark कराई ची those are your ampicillin resistant hosts, that is the host which is carrying the recombinant DNA. So the recombinant host is also growing and also the other non-recombinant host they are also growing. But if I am growing in a plate which is containing your ampicillin, antibiotic ampicillin, then what happens is only the ampicillin resistant cell they will be growing. अन्य सेल्स जो मानक भितरे कि मोर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा नहीं से माने आउ ग्रो करिबे नहीं सो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू आइडेंटिफाई एक्चुअली विच सेल्स आर हैविंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑफ माय इंटरेस्ट नाउ दिस इज योर एक्चुअल एलबी प्लेट आमे जेते बेले लैब रे आमे जेते बेले काम करू आमर एलबी प्लेट आमको एक्चुअली एमिति देखा जाए यू माइट बी सीइंग योर white dots over here your white dots we call it a E. coli colony. These white dots are your E. coli colony. What are your E. coli colony? These colonies have developed from a single E. coli cell. These colonies have developed from a single E. coli cell. Say division, cell division hey ki it has formed a colony which is visible to our eyes. It might be containing your millions of your E. coli cells each colony. So suppose this plate is a ampicillin containing plate, that is it is a growth media, solid growth media containing your ampicillin. Then all the white colony that I am seeing over here, they contain the DNA, recombinant DNA of my interest. एमाने सबू प्रतिटी कॉलोनी एठी जो अच्छी ई कलाई से माने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनी कारण तांको पाखरे मोर ए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जोटा कि वेक्टर भितर अच्छी तांको भितर भी अच्छी आ मोर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छी इट्स अ क्लियर कट बट इफ इट वुड हैव बीन अ एम्पिसिलिन लेस मीडिया एथिरे जदि एम्पिसिलिन न था मत ये व्हाइट कॉलोनी गुड़ाक देखा जाई था सो मुठू तो बिल्कुल भी जानी पारिबिनी जे या भितरे ये कॉलोनी गुड़ाक भितरे का पाखरे मोर रिकॉम्बिनेंट डीएनए अच्छी आ का पाखरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं सेथिपाई आमे वी यूज an antibiotic or a gene resistant to antibiotic as a selection marker in case of your vector. A vector should be having a selection marker. Another type of your screening or another type of your selection which is there in your vector is your blue-white screening. So this blue-white screening by insertional activation
by insertional activation. एटा बहुत बड़े इंपोर्टेंट टर्म टा आमे एबे देखिबा ए स्क्रीनिंग प्रोसेस टा केमिति होची मु एबे एटा दिस इज एन एक्चुअल प्लेट मु ए प्लेट भितरे व्हाइट कॉलोनीज भी देखुची कॉलोनीज माने आगु भी मु कहितली ए कॉलोनी उडा को गोटे ई कॉलाई सेल रु डेवलप हेचंती तो मु ब्लू कॉलोनी मु गोटे ब्लू कॉलोनी भी देखुची एंड व्हाइट कॉलोनी उडा को भी देखुची मु ए प्लेट को देखु देखु मु कहि देबी द व्हाइट कॉलोनीज आर हैविंग द recombinant DNA and the blue colonies they are not having the recombinant DNA. Okay, so this growth media contains a substance which is known as S-gull. This growth media is containing a substance called S-gull, and when I am growing the E. coli in this growth media which is containing S-gull, it will give me either blue colony or white colony. को बेसिस रे दबा जो ई कॉलाई भितरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा अछि से माने सदा बेले व्हाइट कॉलोनी देबे आ जो ई कॉलाई भितरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा नाही से माने ब्लू कॉलोनी देबे. इट इज वेरी क्लियर कट, very simple way of selecting the recombinant host and the non-recombinant host. So this white colony they will be containing the DNA of my interest. Now why how is this done? Why do we get this blue and white colony? It is because the central to this technique is your enzymatic activity of your beta galactosidase. गोटे एंजाइम अच्छी बीटा गैलेक्टोसिडेज से किमिति तार एक्टिविटी टा कौन से किमिति ऐड करछि ता ऊपर ए एंटायर टेक्नोलॉजी इज डेवलप. एंजाइम दिस बीटा गैलेक्टोसिडेज इज encoded by LACZ gene in E. coli that metabolizes lactose into your glucose and galactose. So ए जो LACZ gene अच्छी, let us focus on this plasmid. एटी गोटे एम्पिसिलिन सिलेक्शन मार्कर अच्छी and in light blue we are seeing over here a LACZ gene. This LACZ gene, it will be giving rise to your beta galacto, it will be coding for your beta galactosidase enzyme. से beta galactosidase enzyme टा को कोड करिबा. So जो प्लाज्मिड भितरे beta galactosidase enzyme अच्छी से प्लाज्मिड आमे जदि इंसर्ट करिदेबा कि गोटे होस्ट भितरे एंड इन द प्रेजेंस ऑफ S-gull, सपोज S-gull अच्छी से कौन करिबा S-gull को इट विल हाइड्रोलाइज द S-gull एंड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विच इज ब्लू इन कलर. जदि आमे ए इंटैक्ट प्लाज्मिड या भितरे मोर किछि इंसर्ट किछि भी नाही, मोर इंसर्ट मो फॉरेन डीएनए नाही, जदि मो खाली ए प्लाज्मिड टाकू होस्ट भितर को इंसर्ट करूछि S-gull, this LACZ will be producing your beta galactosidase enzyme. It has a LACZ gene, intact LACZ gene. It will be producing your functional enzyme, not producing, it will be coding for your functional enzyme, and this enzyme will be acting upon S-gull and it will be producing a product which is blue in color. So blue in color मु जदि देखिली ताले मोर gene of interest ए plasmid भितरे नाही. Now consider another fact, there is a multiple cloning site. ए जीन भितरे ही गोटे multiple cloning site region अच्छी. Okay, suppose a multiple cloning site region भितरे EcoR1 रो site अच्छी. So if I cut open this plasmid over here with EcoR1 and from the beginning I have cut my insert with EcoR1 also, so I can easily insert the DNA of my interest into your EcoR1 site which is present inside your LACZ gene. जदि मु मोर LACZ gene भितरे मु मोर इंटरेस्ट दिस येलो इंटरेस्ट नहीं इंसर्ट LACZ gene भितरे मु जदि मो इंसर्ट टाकू जदि मु जॉइन कर देली ता माने कोन आई एम डिस्ट्रक्टिंग दिस जीन. मते ए जीन टाकू मु डिस्ट्रप्ट कर देली आ ए जीन रु मते आ बीटा गैलेक्टोसिडेज मिलिबो नाही because I have destroyed this gene, and this is known as insertional inactivation. I have inactivated the gene by introducing my gene of interest or DNA of interest, and I won't be getting any more beta galactosidase. मते जदि बीटा गैलेक्टोसिडेज मिलिबो नाही मो ग्रोथ मीडियम रे जो S-gull अच्छी सेटा भी आउ हाइड्रोलिसिस तार हेई परिबो नाही किबा मु आउ ब्लू प्रोडक्ट पाइबिनी. सो मु सेठी मते ई कलाई गुडा को व्हाइट कलर रो कॉलोनी मते देखा जिवो.
So in this selection medium, if I see this white color colony, it means the white color colony or the white color bacteria, they are having the DNA of my interest, they are having the recombinant vector, and if it is blue, they are not having the recombinant vector. So I will always be selecting the white colonies. Now type of vectors, आमे कैरेक्टरिस्टिक्स आमर सरीगला एबे आमे जिबा वेक्टर को टाइप रो वेक्टर अछंती. वी हैव बेसिकली vectors have been classified into two types, your cloning vector and your expression vector. So first, what is your cloning vector? Cloning vector are small pieces of DNA which are used to introduce your foreign gene product into a suitable host. They are stable and they can be maintained inside your host. And why do we use this cloning vector? We always use this cloning vector when we require huge amount of the DNA of our interest. Mo DNA रो प्रोडक्ट कहूनी मुझे कहूँ जिते बड़ा आमको बहुत अधिक अमाउंट रे आमर जीन ऑफ इंटरेस्ट कि DNA ऑफ इंटरेस्ट आमको दरकार आमे सेठी आमे ए क्लोनिंग वेक्टर गुड़ाक ही यूज करिबा. This type of vector generally contain your selectable marker, origin of replication and your restriction site. These are the minimum things that must be present in your cloning vector. Cloning vector is of, again it is of following type. It is your plasmid, your bacteriophage, cosmid, then your artificial chromosome. Plasmid are your extra chromosomal circular double stranded DNA replicating element present inside your bacteria. These are extra chromosomal. Extra chromosomal माने कौन? बैक्टीरिया रो क्रोमोसोम अच्छी, प्लाज्मिड गुड़ा को क्रोमोसोम भितरे नहांती. They are separate entities within the bacteria. This is also a piece of DNA or DNA molecule, but they are separate from your chromosome. That's why it is known as your extra chromosomal DNA, double stranded. Sabu DNA genetic material are usually double stranded. These are double stranded. It is circular. It is a ring like, it is circular in shape and it is self replicating unit. Se niche replicate kare and it is not dependent on the chromosomal DNA for its replication. So plasmid was discovered by William Hay and Joshua Lederberg. Vector nature of your plasmid was proved by A. Chang and N. Cohen in 1973. Vector nature माने plasmid can be used as vector. Plasmid भितरे foreign DNA introduce करी हबो आउ एई जो plasmid टा आमे आउ गोटे organism भितर को introduce करी परिबा. That is what a vector is. So this vector nature was discovered by A. Chang and N. Cohen in 1973. The first artificial plasmid कौन आर्टिफिशियली लैब रे जो प्लाज्मिड टा तैयारी होइतला. द नेम इज PBr322. दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड दैट वाज कंस्ट्रक्टेड by whom? It was constructed by Bolivar and your Rodriguez. Your Bolivar and Rodriguez, they constructed the first artificial plasmid, which is your PBr322. Why PBr? P stands for plasmid, B stands for Bolivar and R stands for your Rodriguez. Plasmid show a range of sizes from your 5 kilobase to your 400 kilobase. Plasmid गुड़ाकर 5 kilobase टू आरंभ करके 400 kilobase पर्यंत साइज थाए. बट यूजुअली आमे जते बेले वेक्टर रा कैरेक्टरिस्टिक देखिथिले आमे सेठी देखिथिले जे इट शुड बी हैविंग योर वेक्टर शुड बी हैविंग लेस देन 10 kilobase of your size. So we usually consider those plasmid which is less than 10 kilobase for our recombinant DNA technology purposes. Then plasmid can accommodate an insert size up to 10 kb of DNA fragment. प्लाज्मिड भितर आमे जो फॉरेन डीएनए टा आमे जो इंसर्ट कोचे तार साइज केते रहबा दरकार केते साइज पर्यंत गोटे प्लाज्मिड मु कहि परिबिनी गोटे 10 kb भितरे मु कहि परिबिनी जे गोटे 100 kilobase रो डीएनए मु इंसर्ट करिवि नाही. रेस्ट्रिक्शन थाए केते साइज ऑफ इंसर्ट रो रेस्ट्रिक्शन थाए आ प्लाज्मिड पाई से रेस्ट्रिक्शन इज योर 10 kb. For a plasmid, that restriction is your 10 kb. Plasmid are inserted into your bacterial cell by a process known as your transformation.
प्लाज्मिड गुड़ाक वेक्टर भितर को सॉरी प्लाज्मिड गुड़ाक आमर होस्ट सेल भितर को आमे किमिति आमे इंट्रोड्यूस करू बाय अ प्रोसेस विच इज नॉन एज योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस प्लाज्मिड they generally carry a gene marker, they carry a origin of replication, and they also carry a this cloning sites also they carry. So this is the first artificial plasmid PBr322. Its size is 4361 base pairs and it is having your PST resistant, sorry not PST resistant, it is having your ampicillin resistant and your tetracycline resistant gene as your marker, and also it is having your restriction site for your PST, EcoR1, BAMH1, SAL1 and PVU2. After plasmid, we will be dealing with your bacteriophage. Bacteriophage are your bacteria infecting viruses. These bacteria infecting viruses, they are having a linear DNA as their genome. They have a linear DNA, and if we are cutting this linear DNA at one portion, we will be getting 2 fragments of your DNA, and we usually insert a gene of interest in between these 2 fragments. But before going into this, I would like to say that this bacteriophage, the mode of transfer of DNA, why we are considering this bacteriophage as your vector, it is because the mode of transfer of DNA into the host is the mechanism is it is highly significant. It is highly significant and it is having a very foolproof mechanism. माने आमे प्लाज्मिड अपेक्षा आमे आमर जीन ऑफ इंटरेस्ट किंबा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट बहुत इजीली आमे इंट्रोड्यूस कर पारिबा जदि आमे बैक्टीरियोफेज आमे यूज करूछे. आ दिस इज अ बैक्टीरियोफेज डीएनए. बैक्टीरियोफेज भितर किछिटा रीजन थाए जो इट इज विच इज नॉट रिक्वायर्ड. These are unnecessary reason for us, and we can easily cut out this unnecessary reason and introduce the target DNA in their place. Now a question comes in your mind. When we can easily cut the bacteria with a when we can easily cut the DNA with a single restriction enzyme, why do we need to remove this entire chunk of your DNA from this phase genome? It is because again there is restriction of size. साइज रो रेस्ट्रिक्शन साइज केतिकी साइज पर्यंत बैक्टीरियोफेज भितर एकमोडेट हो पारिबो को साइज रो डीएनए टा बैक्टीरियोफेज भितर एकमोडेट हो पारिबो तार रेस्ट्रिक्शन थाए. सेहि पई आमे अननेसेसरी रीजन गुडा को रिमूव करू, आम टार्गेट डीएनए टा इंट्रोड्यूस करू, देन वी pack the DNA inside the bacteriophage and allow it to infect the host of our interest. Example is your lambda phase, and this bacteriophage can carry your DNA of interest to about 20 kb. Plasmid 10 thila, double the amount 20 kb bacteriophage carry kari pare. Cosmid are hybrid vector. Cosmid are basically your plasmid which is having a cos sequence of your bacteriophage. So what is this cos sequence? This cos sequence basically it helps in the packing of your DNA. It helps in the packing of your DNA. ता माने कौन आमे इठी देखिले the recombinant DNA is packed in a proteinaceous coat, and this proteinaceous coat is highly essential for infection. खाली ए डीएनए टा था आउ आमे ए डीएनए टा को होस्ट सहित आमे छाड़ी दे थांते किछि ट्रांसफॉर्मेशन हे न थांता, माने डीएनए टा होस्ट सेल भितर को जाई न थांता. But if this proteinaceous coat is present, then it helps in the delivery of this DNA into your bacterial host. So over here cosmid is equals to cos site of your bacteriophage plus your plasmid. एठी आमे एटा गोटे cosmid, एठी antibiotic resistant gene अछि, origin of replication अछि, restriction site अछि, cloning site अछि into which the gene of interest has been cloned. So these are the parts which are present in your normal plasmid. So what is difference over here? The difference is your cos gene sequence.
कॉस सीक्वेंसटा जो अच्छी कॉस सीक्वेंसटा ये आम इंट्रोड्यूस करछे कॉस सीक्वेंसटा कोठू आछि कॉस सीक्वेंसटा बैक्टीरियोफेज रो आछि सो दे वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कॉलिन्स एंड हॉर्न इन 1978 and another important feature is that this cosmid can take up DNA insert DNA of about 45 kilobase plasmid ro 10 kilobase thila bacteriophage ro 20 and now it is increasing to 45 kilobase. What are your artificial chromosome? We use artificial chromosome as vector. Artificial chromosome thoroughly artificial way रे तैयारी कराई जे से गुडाक को भी organism रो से गुडाक अणाइनी artificially scientists have developed them in lab. We call it as artificial chromosome. आउ आमे artificial chromosome आमे काहे की develop कलु जेते बेले एते गुडाए vector present थिला कारण आग आम जो वेक्टर गुड़ाक देखी प्लाज्मिड हो बैक्टीरियोफेज हो कॉस्मिड हो तांकर लिमिटेशन थिला कौन लिमिटेशन केते अमाउंट ऑफ इंसर्ट डीएनए बट द लेंथ ऑफ इंसर्ट डीएनए दे कैन कैरी मैक्सिमम कॉस्मिड को आम नहीं कि 45 किलो बेस पर्यंत आम इंसर्ट कर पाथुलु बट यूजिंग दिस आर्टिफिशियल वेक्टर वी कैन कैरी योर डीएनए ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आमे बिलीव भी करि पारि न थांते जदि आमे ए आर्टिफिशियल वेक्टरटा कंस्ट्रक्ट करि न थांते they can take huge chunk of your DNA or they can carry huge chunk of your DNA. So one of the important thing that this artificial chromosome they are having is first they can carry a huge chunk of DNA and they are highly stable. इतने बड़ा चंक ऑफ डीएनए नहीं के भी दे आर हाईली स्टेबल वाई दे आर स्टेबल बिकॉज दे आर हैविंग योर टीलोमेरेस एंड योर सेंट्रोमियर सीक्वेंसेस विद इन देम ये जो टीलोमियर सॉरी नॉट टीलोमेरेस टीलोमियर एंड सेंट्रोमियर रीजन विद इन देम सो ये जो टीलोमियर आउ सेंट्रोमियर रीजन सेंट्रोमियर सीक्वेंस एमानक भितर अच्छी दिस provide your stability to your artificial chromosome. This is a chart which is showing all the vectors and the amount of DNA they can carry. Amara artificial vector रे we are having your yeast artificial chromosome, YACS, your bacterial artificial chromosome, BAC, mammalian artificial chromosome, and from mammalian artificial chromosome we are having human artificial chromosome too. Okay, and this can take your BAC can take your about 3000 kilobase of your DNA. Your PAC can take about 100 to 300 kilobase of your, not 3000, I am sorry, 300 kilobase of your DNA. PAC can take 100 to 300 kilobase of your DNA, and using your YAC about 100 to 2000 kilobase of DNA can be taken. So this is one of your artificial chromosome. It is having your replication origin, then marker, two markers it is having, ampicillin resistant, then telomere. The telomere sequence it is having and your centromere sequence also they are having. So during a human genome project, a human genome project जेतबेले आरंभ होइतला, why did it begin first? For sequencing the entire genome of human. It was a mammoth task. बहुत कष्ट जिनस यहाँ थिला जेतबेले साइंटिस्ट माने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आरंभ करथिले. सो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पाई साइंटिस्ट मानन को वेक्टर दरकार थिला जे कि बहुत बड़ ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए ता भितरे कैरी करि पारिबो. तो सेइथि पाई से माने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम गुड़ाक डिवाइस करथिले एंड दिस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एक्चुअली हेल्प देम ड्यूरिंग दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. Now we will be coming to your expression vector. I'm a cloning vector corner. We have dealt with your cloning vector. Now what is your expression vector? Your expression vector is a type of vector that not only introduces the gene of my interest into your host organism, at the same time it is able to produce the final product, that is it is able to encode protein from that DNA. That is मु जेतेबेले क्लोनिंग वेक्टर नहीं थिली, क्लोनिंग वेक्टर जेतेबेले मु निये क्लोनिंग वेक्टर रे मु प्रोटीन पाई पारिबि नाही. मोर डीएनए ऑफ इंसर्ट जोटा अछि, डीएनए ऑफ इंसर्ट रु
और सॉरी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट मोर जोटा अच्छी मु सेथरु प्रोटीन पाई परिबि नाही इफ आई एम टेकिंग योर cloning vector. But if I am taking my DNA of interest in an expression vector, then apart from getting huge amount of my DNA of interest, I will be also be getting huge amount of mRNA and also protein, which are the products of DNA. Okay, DNA encodes mRNA and protein, so I'll be getting the products too. So when I need to get products, that is mRNA and protein, I will always be using this expression vectors. So in this type of vectors we'll be getting your mRNA and also the gene product. For example मते जदि इंसुलिन प्रोटीन मते जदि दरकार मु इंसुलिन जीन टाको मु सदा बेले मु एक्सप्रेशन वेक्टर रे ही मु इंसर्ट करिवि मु केबे भी क्लोनिंग वेक्टर रे मु करिवि नै कारण क्लोनिंग वेक्टर रे जदि करिवि मते ह्यूज अमाउंट ऑफ खाली जीन टा मिलिबो इंसुलिन जीन मिलिबो किंतु मते insulin protein मिलिबो नाही. So what are the characteristic feature that this expression vector is having? Your expression vector is a bit different from your cloning vector. Why? Because the expression vector should be having your features that will be helping the gene of interest to express itself into mRNA and then to express itself into your protein. तो सेथिपाई कौन दरकार यूजुअली आमर ए एक्सप्रेशन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर एक्सप्रेशन वेक्टर PGEX123. So this expression vector will is having your inducible promoter. सदा बेले मु जोटी मोर जीन टा को इंट्रोड्यूस करिछि तार अपस्ट्रीम माने ता ऊपर सदा बेले गोटे प्रमोटर सीक्वेंस रहिबा दरकार. व्हाट इज अ प्रमोटर? So inside our body too, when transcription is taking place, जेते बेले आमर ट्रांसक्रिप्शन दरकार आमर जीन आगे suppose this is a gene which is present in my body, so you can see upstream of the upstream of this gene there is a promoter sequence. Okay, what does this promoter sequence do? To this promoter sequence your transcription factors they come and bind. What are transcription factors? Transcription factors are protein that will be helping in transcription. तो transcription किए करोची? Transcription RNA polymerase करोची. Once this transcription एठी देखो गुड़ाए आमको peach color, purple color, green color आमको transcription factors देखा जाउची. ए transcription factors when they come and bind to specific sequences on promoter, से माने promoter रो एठी सेठी bind करिबे नाही. They will be binding to specific sequences of promoter. When they come and bind to this promoter, they help in the binding of RNA polymerase 2, and this RNA polymerase will now carry on with the transcription process. What is transcription? Coding of your mRNA from your DNA. तो आमर ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट मोर जो ये ग्रीन कलर रो जीन अच्छी एबे तार ट्रांसक्रिप्शन आरंभ हबो. जदि प्रमोटर नाही आमर ट्रांसक्रिप्शन हे पारिबनी. So the basic characteristic that the expression vector should be having is a promoter. Your expression vector is also having a enhancer region or a enhancer sequence. Enhancer sequence कौन एठी देखो एटा होची गोटे enhancer sequence जोटा कि आम बॉडी भितर थाए. This enhancer sequence it is a sequence of DNA to which your activator protein will be binding. आमर एक्टिवेटर प्रोटीन गुड़ाक आसिक एनहांसर सीक्वेंस रे बाइंड करेंगे. तो से माने कौन करती? सपोज आमर खाली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आ आरएनए पॉलीमरेज मिसिकी आमर गोटे स्पीड रे आमर ट्रांसक्रिप्शन कराउछंती. बट जेते बेले एक्टिवेटर सीक्वेंस आसिक एक्टिवेटर गुड़ाक बाइंड करती आसिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सहित आमर स्पीड टा बहुत अधिक हो जाए. द speed of transcription it is increased. So we also require this enhancer. Speed be increased हुए तांकर efficiency भी तांकर बढ़ी जाई था. So we require an enhancer sequence too. Another important sequence which is present is your Sine-Dalgarno sequence. ए Sine-Dalgarno sequence just मोर जोटी जीन रहुची मु जोटी जीन टा को इंट्रोड्यूस करची. एठी देखो
दिस मजेंटा कलर इज माय जीन मजेंटा कलर जस्ट ऊपर लागिकी मो जीन को लागिकी येलो कलर साइन डेलगानो सीक्वेंस अच्छी एंड दिस साइन डेलगानो सीक्वेंस इट इज ट्रांसक्राइब्ड अलोंग विथ माय जीन फर्स्ट साइन डेलगानो सीक्वेंस टा ट्रांसक्राइब हुए तापरे मो जीन टा ट्रांसक्राइब हुए सो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस जीन टू दिस साइन डेलगानो सीक्वेंस राइबोसोम विल बी कमिंग एंड बाइंडिंग मोर एमआरएनए हला परे मोर प्रोटीन सिंथेसिस हबा दरकार सो प्रोटीन सिंथेसिस पाई मते कौन दरकार मते राइबोसोम दरकार सो मोर जीन आगे जदि सॉरी मोर एमआरएनए आगे जदि साइन डेलगानो सीक्वेंस टा अच्छी राइबोसोम विल कम एंड बाइंड टू दिस साइन डेलगानो सीक्वेंस and the protein expression or synthesis of protein will be carried out on this mRNA template. So आमर गोटे प्रोमोटर रहिबा दरकार एनहांसर रहिबा दरकार साइन डेलगानो सीक्वेंस रहिबा दरकार एट द सेम टाइम आमर स्टार्ट कोडन गोटे रहिबा दरकार स्टार्ट कोडन कौन जो कोडन रु आमर प्रोटीन सिंथेसिस आरंभ हुए AUG इज अ स्टार्ट कोडन सो आमर स्टार्ट कोडन गोटे रहिबा दरकार एंड स्टॉप कोडन टर्मिनेशन स्टॉप कोडन भी गोटे रहिबा दरकार विच इज योर UAG. Okay, so these are the essential features that are present in your expression vector. Expression vector थिले आमे easily आमर प्रोडक्ट प्रोटीन प्रोडक्ट जोटा आमे बहुत अमाउंट रे आमे आमर प्रोटीन प्रोडक्ट को तैयारी करि पारिबा. So this is all about your vectors. In our next class we will be starting with our DNA insert. Thank you so much.